इतिहास का एरिया है गांव का। Good morning, everyone. So today we will discuss previous week mains जो mock test ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ 6ଟା question ର detailed explanation, concept and structure कि आंसर ए जो 6ଟା question जो मैंने टेस्ट ଦେଇଥିଲେ ଆଉ जो मैंने टेस्ट देई भी नथले ସେମାନେ भी सेशन टा अटेंड करि परिबे टू गेट एन आइडिया कि केमती आमे गोटे भलो आंसर फ्रेम करिबा पर क्वेश्चन ता पछरे क्वेश्चन रो कोन डिमांड रहिची कॉन्सेप्ट जदि किछि थिबो ताको आमे डिस्कस करिबा एंड केमिति स्ट्रक्चर गोटे भलो स्ट्रक्चर रे से आंसर टाको लेखिबे सेटा भी डिस्कस करिबा गुड मॉर्निंग एवरीवन तो डिस्कशन स्टार्ट करिबा आगरु जस्ट मते कहि दियंतु कि जहाँ भी मु कहूची और जहाँ मु स्क्रीन रे एनोटेट करूची बोथ ऑडियो एंड वीडियो समस्त को क्लियर अछि कि नहीं एनी वन ऑफ यू लाइव चैट रे जे भी कहि देले चलिबो if both audio and video are clear or not. ओके कहउजंदी क्लियर अछि तो मु सब सेशन रो स्टार्ट रो मु सब बेले कहे कोन पई हमर आंसर राइटिंग टा इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मु आजी आउटी ए क्रिस्प बेसी डिटेल रे न जाई की विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मुझे शॉर्टकट रे कहि दोजी ब्रीफली कि the exam or test is just not about knowledge, it's about how you express your thoughts, you organize your thoughts, then answer writing practice kale it will improve your speed and time management. आउ कोन कहितली मु देन जेतेबे आंसर राइटिंग आपण प्रैक्टिस करिवे एटा आपण एटा सिखेइबो कि हाउ टू राइट एग्जैक्टली व्हाट द एग्जामिनर वांट्स ठीक अछि कहीं ना आंसर राइटिंग रे आपण माने कीवर्ड सिखिबे केमती स्ट्रक्चर करा होउची इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एगुडा सब केमती दिया होउची एंड हाउ टू स्टे टू द पॉइंट एगुडी को सब सिखिबे and most important thing it will reduce your fear and increase your confidence बेले बेले एमती हुए कि क्वेश्चन पेपर आसीगला परे we have certain blank mind moment माने जदि रेगुलरली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थिबो ताहले एग्जाम हॉल it will not intimidate you okay you already know the flow
एंड जहाँ भी नोट्स समस्ते रिवाइज करूचंती माने जहाँ भी रीडिंग समस्ते करूचंती it will bridge the gap between reading and scoring कहीं ना मु कहली the exam is not just about knowledge and answer writing ru it will build your muscle memory ଯେତେବେଳେ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ ହବ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଯିବ କି କେମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ହଉ ନିଜର ନୋଟ୍ସ ହିଁ ହଉ ତାକୁ କେମିତି ରିକଲ୍ କରିବେ କ୍ୱିକଲି ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲି ଓକେ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ରିଭିଜନ୍ ବି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯିବା क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन आमर कहला एक्सप्लेन द मेजर कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पचारची जो इन्फ्लेशन रे इंडिया रे जो मेजर कॉजेस अच्छी ताको एक्सप्लेन करिया को हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन केमिति फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करे आउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करे सेटा पचारची just I'm giving 10 seconds just read the question properly excuse me okay start आमे करिबा इंट्रोडक्शन रु इन्फ्लेशन ऊपर क्वेश्चन अच्छी तो इन्फ्लेशन ऊपर गोटे शॉर्ट इंट्रोडक्शन दबा जेमते कि इन्फ्लेशन कौन व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होची हमर गोटे सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल जनरल प्राइस लेवल कहार गुड्स एंड सर्विसेस इन एन इकोनॉमी इंडिया रे कोन हेची इन्फ्लेशन टा बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स द्वारा इन्फ्लुएंस हुए एंड जो इन्फ्लुएंस हला इट हैज देन सिग्निफिकेंट इम्प्लिकेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ठीक अच्छे इन्फ्लेशन विषय रे कहिले इन्फ्लेशन कौन टिके आम इंट्रोडक्शन रे लिखिले एंड सेटा केमिति इकोनॉमिक ग्रोथ हाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करूची से विषय रे भी टिके टच कले सो एटा गोटे होलिस्टिक इंट्रोडक्शन एठी आम प्रिपेयर कर देने नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी ऑफ द आंसर बॉडी बॉडी रे कौन कंप्राइज रहइबो कि फर्स्ट पचार थिला कि मेजर कॉजेस कौन What are the major causes of inflation in India? First, मु कहली कि डिमांड साइड रे किछि कॉज थिबो डिमांड साइड रो एंड देन सप्लाई साइड रो किछि कॉज थिबो डिमांड साइड कॉज के कोन इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जेमती कि जितेबाला जनकर इनकम बढ़े अर्बानाइजेशन हुए रूरल एरियाज रो बा डेवलपमेंट हुए कि जदि कौन सी गुड्स बा सर्विस रो हायर डिमांड रही इकोनॉमी रे तो सेथिरे कौन हबो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितेबाला बढ़िबो सेतेबाला प्राइस भी ता संगे बढ़िबो सेकंड कौन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जितेबाला गवर्नमेंट जो आमर सब्सिडीज हैला बा वेलफेयर स्कीम्स हैला गवर्नमेंट जितेबाला ए सब जिंस उपरे अधिका स्पेंड करे तो सेटा
फर्दर कौन करिवो जेतेबेले लोक मानकु सब्सिडी मिलुची तांका पे वेलफेयर स्कीम मिलुची तांकर लाइफ लाइवलीहुड एगुडा सब इजी हे जाउची तो सेतेबेले डिमांड बढ़िवो एग्रीगेट इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड थर्ड लूज मॉनेटरी पॉलिसी लूज मॉनेटरी पॉलिसी रे कौन हुए कि जेतेबेले लिक्विडिटी माने हाई थाए इकोनॉमी रे आउ इंटरेस्ट रेट बहुत लो थाए धर फॉर एग्जांपल जने किए धर लोन नेला आगुरु जो इंटरेस्ट रेट धर जदि 10% दबाकू रहुतिला जदि सेटा कमी कि एबे 7 कि 5% अछि तो सेतरे कोन हबो लोक अधिका लोन नेबे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल सो हायर लिक्विडिटी एंड लोअर इंटरेस्ट रेट सेतरे कोन हबो मनी सप्लाई बढ़िबो एंड डिमांड डिमांड पुल इन्फ्लेशन हबो एबे हमें देखिबा सप्लाई साइड फैक्टर्स कोन रहउची बा कॉजेस कोन रहउची फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई चेन डिसरप्शंस सप्लाई चेन डिसरप्शन फॉर एग्जांपल सीजनल शॉर्टेज हैला कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज रे सेथिरे किछि प्रॉब्लम्स रहउची बा ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स रहउची बा किछि क्राइसिस आसीगला जेमति कोविड 19 आसीतिला सेथिरे हमर कोन हबो कॉस्ट बढ़िबो कॉस्ट बढ़ला माने कोन हैला इन्फ्लेशन हैला एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस ऑन मॉनसून जे एग्रीकल्चर टा मॉनसून ऊपर बेसी डिपेंडेंट आम कंट्री रे जो बैड मॉनसून्स रही बैड मॉनसून हेले कौन हम क्रॉप रो आउटपुट रिड्यूस हम देन प्राइस राइज हम कहीं आगुरी जी सप्लाई होता फूड रो मार्केट रे सेटा कमी जीवो सो प्राइस विल राइज ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स देन थर्ड हाई इनपुट कॉस्ट्स हाई इनपुट कॉस्ट रे कौन इनक्लूड होची कि जेमति जदि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज हबो ताहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो ट्रांसपोर्टेशन रहिला सेटा भी इंक्रीज हबो सो ओवरऑल इंक्रीज इन द ओवरऑल इन्फ्लेशन हबो आकु कहा जाय कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन राइट आउ गोटे मेजर कॉज होची स्ट्रक्चरल फैक्टर्स डिमांड और सप्लाई साइड बाय साइड बुझी गले एबे आउ गोटे कॉज एठी नोट डाउन करिबा स्ट्रक्चरल फैक्टर्स रे जेमति की लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर रे लो प्रोडक्टिविटी केतेबेले जेतेबेले सप्लाई चेन हमर इनएफिशिएंट थिबो कि स्टोरेज फैसिलिटी ग्रेन्स गुडी को स्टोर करबा को जो फैसिलिटीज अछि से गुडी को लिमिटेड थिबो एंड सेथिरे कोन हुए प्राइस वोलेटिलिटी हुए इट कॉजेस प्राइस वोलेटिलिटी देन हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जेतेबेले इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर थाए सेतेबेले डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्रीज हुए एटा समस्त जानिथिबे स्पेशली फॉर फूड एंड एसेंशियल्स आउ गोटे कोन स्ट्रक्चरल फैक्टर हबो मार्केट इम्परफेक्शंस मार्केट इम्परफेक्शंस मिडल मैन हे गले होर्डिंग हे गला किछि कंपटीशन नाही लिमिटेड कंपटीशन अछि तो सेकुडियो कोन करे आर्टिफिशियल प्राइस राइज करे मेजर कॉजेस रे हमें डिमांड साइड रे देखिले देन सप्लाई साइड देन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी देखिले देन वी विल एड्रेस द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जोटा पचारथिला कि इन्फ्लेशन रो कोन इंपैक्ट रहउची इकोनॉमिक ग्रोथ उपरे एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उपरे वन बाय वन देखिबा फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट को साइड बाय साइड देखिबा economic growth first negative
आउ पॉजिटिव एंड इम्पैक्ट कौन कहा उपरे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ठीक अच्छे नेगेटिवली केमिति अफेक्ट करिवो इकोनॉमिक ग्रोथ को फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिड्यूस द परचेजिंग पावर धर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज रे जदी जणे आगुरु 10टा कमोडिटी अफोर्ड करि पारुथिला जेतेबेले इन्फ्लेशन बढ़ी जिवो ताहाले सेई सेम अमाउंट ऑफ मनी जो 100 रुपीज हला सी मे बी 5टा कि 6टा ही सेतरे अफोर्ड करि पारुची कि आसुची सेतरे सो इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स सो कंज्यूमर्स से माने कोन करिवे से माने कम बाय करिवे दे बाय लेस तो एथिरे कोन हबो इट विल रिड्यूस द डिमांड for non-essential goods. Then discourages the long-term investment. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करे कहीं ना अनसर्टनटी अच्छी एबे प्राइस रे ठीक अच्छी तो सेते कौन हम बिजनेसेस माने कौन हो कॉशियस हो थर्ड हायर इंटरेस्ट रेट्स जेतेबेले इन्फ्लेशन बढ़ी जीवो आरबीआई ता मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करिवो टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन सो से सेतेबेले कोन करिवो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाई देबो ताकि मार्केट रे जो लिक्विडिटी अछि सेटा अब्सॉर्ब हो एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल रे आसु फोर्थ कॉस्ट ओवररन्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आगुरु धर जो मटेरियल मे बी 10 रुपीस रे मिलुतला से मटेरियल्स रो सो प्राइस बढ़ी जिवो प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स राइज सो इट विल डिले द डेवलपमेंट पॉजिटिव रे देखियो पॉजिटिव साइड इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट सेतबेले आसे जेतबेले इन्फ्लेशन माइल्ड थाए इन केस ऑफ माइल्ड इन्फ्लेशन जेमति कि इट एनकरेजेस प्रोडक्शन ओके जो मॉडरेट बा माइल्ड इन्फ्लेशन रहिला सी फ्यूचर प्राइस को इट सिग्नल्स हायर फ्यूचर प्राइस मोटिवेटिंग से बड़ फर्म्स मान को एथिरे से माने मोटिवेट हुअंती टू प्रोड्यूस मोर सो इट एनहांसेस प्रोडक्शन reduces real burden of debt गवर्नमेंट आउ जो बोरोवर्स माने रहिले से माने तांको लोन्स को रीपेमेंट करि परिबे विथ चीपर मनी एबे हमें देखबा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर कोन इन्फ्लुएंस रहउची इन्फ्लेशन रो फर्स्ट इट हर्ट्स पुअर द मोस्ट पुअर द मोस्ट बा जो फिक्स्ड इनकम लोक माने जो रहिले जो मान को सैलरीड पर्सन आमे कहूचे भी फिक्स्ड इनकम ग्रुप जो रहिले दे लूज देयर परचेजिंग पावर मु जो कहली एग्जांपल जदी गोटे एक्सक्यूज मी जदी 100 रुपीस जदी आगु से 10टा कमोडिटी अफोर्ड करि परतले बे 100 रुपीस रे 5टा ही से अफोर्ड करि परचंदी सो इट रिड्यूसेस देयर परचेजिंग पावर फूड इन्फ्लेशन आउ गोटे प्रॉब्लम फूड इन्फ्लेशन से कौन करे पर्टिकुलरली जो लो इनकम आमर रहिले लो इनकम हाउसहोल्ड्स तांकु हेवीली अफेक्ट करे as they spend a large share on essentials second benefits asset holders लोक माने जो मानक पाखरे रियल एस्टेट अच्छी बा स्टॉक्स अच्छी कि गोल्ड से माने रखी चंती से माने दे ऑफन गेन as asset prices rise with inflation इन्फ्लेशन रे कोन हबो एसेट रो प्राइस सब राइज हे जाय ए सब जेम रियल एस्टेट हे गला हमर स्टॉक बा गोल्ड तो से माने को बेनिफिट मिले जो माने एसेट होल्ड कर जंदी वेज प्राइस गैप वाइडन्स
wages rise करेनी as fast as prices. so एटा कौन कला जेतेबेले जो रेट रे प्राइस राइज करूची से सेही रेट रे वेज समस्तଙ୍କର तो राइज रेज हुएनी ना तो एटा गोटे गैप क्रिएट कर देला गोटे ब्रिज क्रिएट कर देला सॉरी गैप क्रिएट कर देला सो इट इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी. Last, redistribution between borrowers and lenders. Borrowers ସେମାନେ ଗେନ୍ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ରିଅଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ ଡେଟ୍ ର ସେଟା ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଲେଣ୍ଡର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଲୁଜ୍ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ରିଅଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ ରିପେମେଣ୍ଟ ର ସେଟା ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ. କନକ୍ଲୁଡ କେମିତି କରିବା ଆନ୍ସର କୁ सेम कंसोलिडेट करिकी लिखिबा. इन्फ्लेशन जो आमर रही इट इज ड्रिवन बाय मिक्स ऑफ डिमांड सप्लाई फैक्टर्स डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स. जेतेबेले जो माइल्ड इन्फ्लेशन आमर रोची इन्फ्लेशन जेतेबेले माइल्ड रोची से कौन करुची से ग्रोथ को सपोर्ट करुची एंड परसिस्टेंट और हाई इन्फ्लेशन जो रोची it reduces the purchasing power, distorts the investment decisions and worsens the income inequality. so कौन करा जिबा दरकार balanced monetary and fiscal policies. बैलेंस मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज along with जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमर जदि हम एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर रे कराई दबा प्लस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जदि हम कराई दबा ताहले सेटा बहुत एसेंशियल हबो टू एंश्योर कि इन्फ्लेशन टा स्टेबल हे कि रहू आउ इंक्लूसिव ग्रोथ हो. Next question, discuss the effectiveness of monetary and fiscal policy measures in controlling inflation in India. Suggest reforms for sustainable price stability. Read the question. Inflation control in India. आमर इंडिया रे जो इन्फ्लेशन कंट्रोल रही सेटा कहा ऊपर मेनली डिपेंड करे डिपेंड्स मेनली ऑन टू टूल्स. फर्स्ट होची आमर मॉनिटरी पॉलिसी देन सेकंड होची fiscal policy. Monetary policy it is managed by the RBI and fiscal policy managed by the government. And दीटा जकर aim कोन to maintain the price stability. Price stability while supporting economic growth as mandated by India रो flexible inflation targeting framework केते रहउची 4% प्लस और माइनस 2%. एटा होची टार्गेटिंग फ्रेमवर्क इंडिया रो इन्फ्लेशन टार्गेटिंग फ्रेमवर्क. फर्स्ट हम एड्रेस करिबा जो पचारसी इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स. effectiveness of monetary policy measures. फर्स्ट हमें देखिबा तार इफेक्टिव एस्पेक्ट जेमति कि इन्फ्लेशन टार्गेटिंग रो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हेची बा इंप्रूव हेची सिंस जेबेठरू
तार क्रेडिबिलिटी बा इन्फ्लेशन टार्गेटिंग इंप्रूव होईची इन्फ्लेशन वोलाटाइलिटी रिड्यूस होईची देन सेकंड कोन रेपो रेट हाइक्स हेल्प रिड्यूस डिमांड प्रीवियस क्वेश्चन रे भी आमे टिके डिस्कस कले कि आरबीआई जेते बड़े रेट को हाइक करे सक्सेसफुली इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रिड्यूस करबा पई बाय टाइटनिंग द लिक्विडिटी तो से टाइम रे लोन्स कोन हे जे लोन्स बिकम कॉस्टलियर ओएमओज बा ओपन मार्केट ऑपरेशन आमे कहूचे एटा कोथ पे यूज हुए एटा यूज हुए टू एब्सॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन पीरियड ठीक अच्छे ओएमओज रे पर्टिकुलरली कौन हुए आरबीआई सेल्स बॉन्ड्स जेतबे बॉन्ड जने किनिला सी कौन पैसा देकी किनिबो तो ता पाखरे बॉन्ड रहिला आ आरबीआई इट सक्ड द एक्सेस लिक्विडिटी और एक्सेस मनी सीआरआर एंड एसएलआर adjustments same in the as the case of repo rate सेम इफेक्ट एमाने भी पकांदी जेतोले सीआरआर और एसएलआर बढ़ाई दिया जाए तो इट विल हेल्प द मैनेज द मनी सप्लाई इफेक्टिवली एंड लिमिटेशन कौन रहउची कि लार्ज पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन रो गोटे बहुत बड़ पार्ट एटा सप्लाई ड्रिवन कहीं जो फूड आ फ्यूएल रे जो इन्फ्लेशन आसुची दे रिस्पोंड स्लोली टू मॉनेटरी टाइटनिंग तांको ऊपर मॉनेटरी टाइटनिंग जोटा आरबीआई इम्प्लीमेंट करे ता ऊपर तार प्रभावटा एते जल्दी पड़ुनी ऑन फूड एंड फ्यूएल इन्फ्लेशन देन ट्रांसमिशन constraints वीक पास थ्रू बा ट्रांसमिशन रोची कहीं ना इकोनॉमी रे बैंक्स मान पाखे हाई एनपीएस अच्छी स्मॉल सेविंग्स रेट अच्छी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट एगुड़ी सब ट्रांसमिशन कॉन्स्टेंट्स इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस रे कौन होची कि इट अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरेस्ट रेट चेंजेस ओके देन हमें देखिबा इफेक्टिवनेस ऑफ द फिस्कल पॉलिसी मेजर्स फर्स्ट हमें तार इफेक्टिव एस्पेक्ट्स देखिबा बा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देन हमें लिमिटेशंस देखिया फर्स्ट कटिंग टैक्सेस ऑन फ्यूएल एंड एसेंशियल्स एटा कौन करिबो एटा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो रहउची कहीं ना जो मटेरियल्स तांको आगुरु लागुतला जे टैक्स बढ़ाई दिया जिवो ताहले बिजनेसेस माने कौन करिवे से माने भी तांकर प्राइस हाई करिवे टू कंपेंसेट द लॉस और टू पे द टैक्सेस और टू मेक प्रॉफिट्स मोर आ फ्यूएल बा एसेंशियल्स ऊपरे भी जदी की कट कर दिया जिवो तांकर प्राइस को ताले सेटा भी हेल्प करिवो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को रिड्यूस करिबारे as seen when fuel excise duties were cut it reduces the cost push inflation then targeted welfare schemes जो वेलफेयर स्कीम रहिला the PDS ହେଇଗଲା PMGKY ହେଇଗଲା they reduce the food prices pressure by stabilizing the supply reduction of fiscal deficit ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को लिमिट रे रखिबारे हेल्प करे लिमिटेशंस
welfare driven spending. वेलफेयर ड्रिवन स्पेंडिंग गोटे लिमिटेशन कहीं इलेक्शन इयर्स और क्राइसिस रे आमे देखि कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ी जाए सो इट रेजेस द अननेसेसरी डिमांड देन सेकेंड कौन सब्सिडी बर्डन्स सब्सिडी बर्डन्स रे प्राइस डिस्टॉर्ट हुए एंड मार्केट एडजस्टमेंट भी डिले हुए देन फिस्कल स्लिपेजेस फिस्कल स्लिपेजेस हेले कौन हम कि बोरोइंग बहुत बढ़ी जीवो इट विल लीड टू अ हायर बोरोइंग एंड क्राउडिंग आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थर्ड आमे कौन एड्रेस करबा क्वेश्चन रो रिफॉर्म्स फॉर सस्टेनेबल प्राइस स्टेबिलिटी कौन कौन रिफॉर्म नवा दरकार फर्स्ट तो मॉनिटरी जो फ्रेमवर्क आमर रही ताकू स्ट्रेंथन करा जिबा दरकार improve the monetary transmission ट्रांसमिशन जमती जो बैंक रो जो बैलेंस शीट रहला ताको क्लीन अप करिबा बा मोर लोन्स को एक्सटर्नल बेंचमार्क सहित लिंक करिबा इट विल improve the monetary transmission enhance inflation forecasting models इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग मॉडल्स को एनहांस करबा रियल टाइम डेटा जतबळे मिलिबो फूड फ्यूल और सर्विसेस रे it will strengthen the monetary policy or monetary framework agricultural and supply side reforms modernize storage and logistics स्टोरेज और लॉजिस्टिक को मॉडर्नाइज कले कौन हम वेस्टेज रिड्यूस हम प्राइस वोलाटिलिटी भी कम इन फूड आइटम्स देन प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट कले कौन हम लेस डिपेंडेंस रहिबे ऑन अ फ्यू क्रॉप्स सो इट विल रिड्यूस द सप्लाई शॉक्स थर्ड strengthen the MSP procurement and ENAM एथिरे मार्केट रो एफिशिएंसी बढ़िबो एंड मिडलमैन जो रहिले तांकर इन्फ्लुएंस मिडलमैन तांकर इन्फ्लुएंस रिड्यूस हबो देन फिस्कल रिफॉर्म्स फिस्कल रिफॉर्म्स कौन होना दरकार फर्स्ट तो इंट्रोड्यूस काउंटर साइक्लिकल फिस्कल रूल्स काउंटर साइक्लिकल फिस्कल रूल्स कहले कौन बुझे कि एक्सेसिव स्पेंडिंग को रिड्यूस करिवा जेतेबेले डिमांड बढ़ुतिबो रिड्यूस द एक्सेसिव स्पेंडिंग ड्यूरिंग द डिमांड सर्जेस रैशनलाइज सब्सिडीज ग्रेजुअली efficiency को improve करिबा without hurting the poor increase public investment in infrastructure जदि लॉजिस्टिक कॉस्ट लो रहिबो सेटा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को भी रिड्यूस करिबो आ गोटे कोन रिफॉर्म आनिबा दरकार एनर्जी एंड फ्यूल रिफॉर्म्स एनर्जी एंड फ्यूल रिफॉर्म्स रे जेंती फ्यूल टैक्सेस जो रही ताकू स्टेबलाइज करिबा इट विल रिड्यूस द फ्रीक्वेंट पॉलिसी इंड्यूस्ड प्राइस वोलाटिलिटी देन
रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड करा जाऊ सेतरे जो इंपोर्ट होची हमरो क्रूड ऑयल ता ऊपर डिपेंडेंस रिड्यूस हबो सो कंक्लूजन आमे एठी कंक्लूड केमती करिया कि जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज रहिला मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज सेटा सेतबळे इफेक्टिव रहिबो कंट्रोल करिबारे इन्फ्लेशन रे जदि तांकर इंपैक्ट लिमिटेड थिबो ओके व्हेन इन्फ्लेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम सप्लाई शॉक्स सस्टेनेबल प्राइस स्टेबिलिटी जो इंडिया रो सस्टेनेबल प्राइस स्टेबिलिटी इन इंडिया ताकू दरकार गोटे कंबाइंड अप्रोच गोटे क्रेडिबल मॉनेटरी पॉलिसी जोटा आमे ऊपर डिस्कस कले एंड डिसिप्लिन्ड फिस्कल मैनेजमेंट आउ डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर हो एनर्जी बा लॉजिस्टिक्स जोगुड़ी आमे डिस्कस कले आई एम जस्ट कंसोलिडेटिंग द अबव लाइंस ये जो बैलेंस्ड अप्रोच को हमें डिस्कस कले इट एंश्योर्स स्टेबल प्राइसेस व्हाइल सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स अर्बन प्लानिंग रिफ्लेक्ट्स अ हाई लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आमर रहिला it is one of the world's earliest urban civilization आउ एटा जना जाए और it is noted for its advanced town planning standardized architecture and highly organized socio-economic system जोटा कि गोटे लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट्स को सपोर्ट करुथिला ओके इंट्रोडक्शन आमे डिस्कस कले बॉडी रे कोन एड्रेस करिबा फर्स्ट मेजर फीचर्स जो आईवीसी रो रहिला ताकू आमे डिस्कस करिबा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेजर फीचर होची तांकर अर्बन प्लानिंग केमती थिला अर्बन प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स गुडा आउ तांकर ओरिएंटेशन कोठु को जाइथिला नॉर्थ टू साउथ थिला तांकर ओरिएंटेशन एंड ईस्ट टू वेस्ट तो एटा गोटे ग्रिड फॉर्म करूतला ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स थिला तांकर सिटाडेल डिविजन इनटू सिटाडेल जो सिटाडेल होची एडमिनिस्ट्रेटिव बा रिलीजियस एरिया एंड लोअर टाउन लोअर टाउन कौन लोअर टाउन होची रेसिडेंशियल सेठी लोक माने रहउतिले एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम तांकर जो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम थिला ताकू सेथरे ड्रेन गुडी को जो थिला से गुडी को कवर्ड थिला एंड इंस्पेक्शन चैम्बर्स थिला स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ट ब्रिक्स एंड यूनिफॉर्म स्ट्रीट विड्थ्स ठीक अच्छे अर्बन प्लानिंग डिस्कस कले देन आमे सेकेंड देखिबा आईवीसी रो आर्किटेक्चर केमती थिला आर्किटेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी रूम ब्रिक हाउसेस थिला विथ कॉटियर्स भी थिला एंड ब्रिक हाउसेस गुडा मल्टी रूम थिला
with courtyards. Second, public buildings thila such as granaries, great bath. ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍ କୋଉଠି ଥିଲା? ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ। assembly halls. Third, fortified citadels. citadels fortified ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ citadels ତାଙ୍କର fortified ଥିଲା ସେଟା କ'ଣ show କରୁଛି? It shows security and organized authority. Third, economic organization. economic organization ରେ କ'ଣ? agriculture supported by irrigation. irrigation ସେତେବେଳେ start ହେଇଯାଇଥିଲା। agriculture supported by irrigation ଯେମିତି wheat ହେଲା, barley, cotton ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ grow ହଉଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ। then crafts. crafts ରେ ଆମର ଆସେ bead making, pottery, metallurgy metallurgy ମାନେ copper, bronze related, shell carving ଏସବୁ ବି ଚାଲିଥିଲା। and trade, most important trade. trade କାହା ସାଙ୍ଗରେ? long distance trade ଚାଲିଥିଲା ମେସୋପୋଟାମିଆ ସାଙ୍ଗରେ। ଯେମିତିକି seals, weights and measures that indicate regulated commerce. social features. social features କ'ଣ ଥିଲା IBC ଟାଇମରେ? uniform town planning. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, এটা শো କରୁଛି କି ସେତେବେଳେ social inequalities absent ଥିଲା, absence of extreme social inequalities. extreme social inequalities. then standard weights and seals thila जोटा कि collective regulation को reflect करे। standard weights and seals and it shows collective, it showed collective regulation. third, evidence of peaceful society, evidence मिली of peaceful society। कहीं ना सेतबळे मेजर वेपन की पैलेसेस किछि नथिला तो सोसाइटी काइंड ऑफ पीसफुल थिला। राइटिंग एंड रिलीजन। फर्स्ट तो तांकर अनडेसिफर्ड थिला स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट से माने फॉलो करूतिले, दैट वाज अनडेसिफर्ड। and जो तांकर रिलीजन थिला दे फोकस्ड ऑन नेचर, fertility symbols, mother goddess and proto Shiva. ठीक अछि। नेक्स्ट आमे देखिबा तांकर अर्बन प्लानिंग जो थिला, अर्बन प्लानिंग हाउ इट रिफ्लेक्ट्स ऑन सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थिला, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जेमती कि ब्रिक्स हैला, वेट्स हैला जो मु कहिली, मेजरमेंट्स हैला सेगुडी करे गोटे यूनिफॉर्मिटी रहिछि अक्रॉस द सिटीज जोटा कि इंडिकेट करूछि दैट दे हैड स्ट्रांग गवर्नेंस एंड जो प्लान लेआउट्स रहिछि ग्रिड सिस्टम एंड ऑल। सो एटा कोन सजेस्ट करूछि कि जो प्रायर सर्वेइंग आउ सिविक रेगुलेशन थिला। सेकेंड, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी।
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक रिस्पांसिबिलिटी कौन जो सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम रही सेटा एम्फसाइज करुछि ऑन हाइजीन पब्लिक बाथ्स वेल्स जो ग्रानरीज रहिला दे आल्सो इंडिकेट कि पब्लिक यूटिलिटीज को समस्ते शेयर करुथिले इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन केमती थिला कि क्राफ्ट रो जो एरियाज थिला कि सेटा बहुत डिस्टिंक्ट थिला फॉर एग्जांपल लोथल रे तांकर थिला बीड फैक्ट्री ठीक अछि तो एटा कोन शो करूची गोटे डिविजन ऑफ लेबर शो करूची वेयर हाउसेस डॉकयार्ड्स एंड ट्रेड सील्स जो रहिला सेटा को शो करूची कि तांकर कमर्शियल एक्टिविटीज भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड थिला organized commercial activities fourth social cohesion सोशल कोहेशन जो स्टैंडर्डाइज टाउन डिजाइन रहिला अक्रॉस हरप्पा हो कि मोहिंजोदारो कालीबंगन बा ढोलवीरा सेटा सजेस्ट करे कि कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समस्ते शेयर करुतले तो एटा गोटे सोशल कोहेशन प्रोवाइड कला एंड सेतबळे एमती बड़ बड़ पैलेसेस हो ऑस्टेंशियस पैलेसेस कि किछि टेंपल सेमती किछि नथिला एब्सेंस ऑफ दीज इम्प्लाई कौन करुच्ची कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थिला आउ इगैलिटेरियन वैल्यूज थिला फिफ्थ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मैनेजमेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मैनेजमेंट जो लोथल रे जो डॉकयार्ड थिला यूनिफॉर्म सील और रेगुलेटेड वेट्स सेटा इंडिकेट करे कि गोटे स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक सिस्टम कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेट होतला अक्रॉस द रीजन्स लेट्स कंक्लूड आईवीसी एटा डेमोन्स्ट्रेट हेछि एज एन रिमार्केबल इट हैड रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग जोटा कि वेल प्लान थिला स्ट्रीट्स थिला ड्रेनेज थिला वाटर मैनेजमेंट हो कि पब्लिक बिल्डिंग हो जोटा कौन रिफ्लेक्ट करुची ऑर्गेनाइज्ड सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आउ तार एम्फासाइज रहिथिला सब बेले स्टैंडर्डाइजेशन कलेक्टिव वेलफेयर and efficient administration आ उपरे तो सेटा फर्दर कौन हाईलाइट करछि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड अर्बन सोसाइटीज ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड बुझियला नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कंपेयर द सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड्स हाईलाइट द मेजर चेंजेस दैट ऑकर्ड बिटवीन द टू फेजेस सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ को कंपेयर करबा को कहिछि कहा कहा भितरे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड्स भितरे एंड देन सेकंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कोन कि तांकर जो मेजर चेंजेस हेइथिला बिटवीन दिस टू फेजेस से चेंजेस गुडा को हाईलाइट करबा को कहिछि इंट्रोडक्शन रे हमें वैदिक पीरियड विषय टिके लिखिबा वैदिक पीरियड आ एटा ब्रॉडली डिवाइड हेछि इनटू अर्ली वैदिक एंड later Vedic. Early Vedic and later Vedic phases and ए दीटा भितरे significant transformation हेछि going from early Vedic to excuse me to later Vedic. Transformation को areas रे then society रे economy religion as Aryans moved from northwest to the Gangetic plains. Northwest to Gangetic plains. Now, ये जो changes occur hela, it shaped the foundation of the early Indian civilization. First हमें देखिए
जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ रहिला इन अर्ली वैदिक वर्सेस लेटर वैदिक पीरियड्स. सोसाइटी दीटा पार्ट रे हमें देखिबा सोसाइटी को. फर्स्ट हमें देखिबा कि अर्ली वैदिक पीरियड रे कोन थिला, देन हमें देखिबा सोसाइटी लेटर वैदिक पीरियड रे कोन थिला. अर्ली वैदिक पीरियड रे सोसाइटी was tribal and semi nomadic and family basic unit कोन थिला, family थिला basic unit. and women मानकर status कोन थिला, they enjoyed relatively higher status. जेमती कि सेमाने सभा और समिति रे भी पार्टिसिपेट करूथिले. वर्ण सिस्टम सिंपल थिला. वर्ण सिस्टम सिंपल थिला जेमती कि तीनटा डिवीजन थिले नॉर्मली, ब्राह्मणस, देन क्षत्रियस एंड वैश्यस. शूद्रस को विषय रे बहुत स्पार्सली मेंशन हेजी. सोशल डिस्टिंक्शन एतेटा रिजिड नथिला. सोशल डिस्टिंक्शन वाज लेस रिजिड. लेटर वैदिक पीरियड रे सोसाइटी मोर सेटल हे गला. सोसाइटी became more settled. Hierarchical and patriarchal. Caste system further rigid ହେଇଗଲା. Caste system hardened but further rigid ହେଇଗଲା caste system. women ମାନଙ୍କର जो पोजीशन थिला सेटा डिक्लाइन ହେଇଗଲା କାହିଁ ନା ସେମାନେ ଆସେମ୍ବଲି କି କିଛି रिचुअल्स रे ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ रिड्यूस ହେଇଗଲା, ପାର୍ଟିସିପେସନ रिड्यूस ହେଇଗଲା. ଦେନ୍ ଆସେମ୍ବଲିज ରେ ବି ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲେ. ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ କୁ ମନା କରି ଦିଆଗଲା. ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ବିକେମ୍ କମନ୍. ओके. इकोनॉमी केमते डिफरेंट थिला. फर्स्ट अर्ली वैदिक रे देखिबा, देन लेटर वैदिक रे देखिबा. इकोनॉमी नॉर्मली पेस्टोरल थिला. अर्ली वैदिक रे कैटल्स थिले तांकर मेन वेल्थ. देन लिमिटेड थिला एग्रीकल्चर कहीं ना बार्ले हो थिला तांकर मेन क्रॉप. बार्ले वाज द मेन क्रॉप. टेक्नोलॉजी सिंपल थिला. लिमिटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस से माने करूथिले एंड प्राइवेट लैंड ओनरशिप नथिला. लेटर वैदिक पीरियड रे हमें कोन देखिले एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होची. जेमति कि फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स को से माने मूव कले तो एग्रीकल्चर रे एक्सपेंशन देखा गला. यूज ऑफ आयरन टूल्स से माने फॉरेस्ट क्लियर करिबारे तांको हेल्प कला. सरप्लस प्रोडक्शन जोटा कि स्पेशलाइजेशन क्राफ्ट कला आउ ट्रेड ग्रोथ भी कला तांकर. इमर्जेंस ऑफ टैक्सेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. इबे देखबा रिलीजियस लाइफ रे कोन डिफरेंस थिला अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक रे. अर्ली वैदिक पीरियड से माने कोन करथले को गॉड्स को वर्शिप करूथले नेचर बेस्ड गॉड्स. एंड लेटर वैदिक रे
नेचर बेस्ड गॉड्स को से माने वर्शिप करुଥିଲେ जेमति कि इंद्र हे गले अग्नि वरुण सूर्य सिंपल रिचुअल्स फॉलो करुଥିଲେ रिचुअल्स एते कॉम्प्लिकेटेड नथिला सिंपल रिचुअल हिम्स ऑफरिंग्स यज्ञ से माने फॉलो करुଥିଲେ किछि भी टेंपल बा आइडल्स नथिले पूजा करिवा पई कि देयर वर नो टेंपल्स नॉर आइडल्स लेटर वैदिक पीरियड रे कोन राइज इन प्रजापति विष्णु रुद्र ओके आउ जो नेचर बेस्ड गॉड्स थिले तांकर डिक्लाइन हैला रिलीजियन टाकू बहुत रिचुअलिस्टिक करे देले और कॉम्प्लेक्स करे देले प्रिस्टली पावर रे ग्रोथ आसिला जो ब्राह्मण क्लास थिले देन बिगिनिंग ऑफ फिलोसॉफिकल आइडिया सीन इन उपनिषद्स seen in Upanishads. थर्ड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एटा एड्रेस करबा कहि छी कि दीटा जको फेज रे मेजर चेंजेस कोन थिला फर्स्ट आमर थिला कि पास्टोरल टू एग्रेरियन इकोनॉमी आमे देखिले विथ आयरन टेक्नोलॉजी फर्स्ट ट्राइबल थिला सोसाइटी प्लस इगैलिटेरियन भी थिला सोसाइटी सेथिरु से माने ट्रांजिशन करी कि रिजिड हे गले एंड वर्ण बेस्ड हे गला सोसाइटी वुमेन कर स्टेटस डिक्लाइन कला राइज ऑफ किंगशिप एंड स्टेट फॉर्मेशन टैक्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप कला रिलीजियन शिफ्ट हे गला रिलीजन शिफ्टेड कहीं आगुरु सिंपल थिला रिलीजन सिंपल टू वर्शिप विथ एलाबोरेट रिचुअल्स को शिफ्ट हे गला आ ब्राह्मणिकल डोमिनेंस आसी गला कहीं एठी हमें देखले कि प्रिस्टली पावर रे डोमिनेंस आसिला इमर्जेंस ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट इमर्जेंस ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट जेमति कि परे जो ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट्स आसिला जेमति बुद्धिज्म जैनिज्म इट पेव्ड द वे फॉर द लेटर ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट्स लाइक देम आमर जो ट्रांजिशन टा हैला अर्ली वैदिक पीरियड रो लेटर वैदिक पीरियड जाके सेटा रिफ्लेक्ट करूची दैट देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम सिंपल पेस्टोरल जोटा में डिस्कस करले ऑलरेडी सिंपल पेस्टोरल अर्ली नोमैडिक सोसाइटी रो कोन हे गला कॉम्प्लेक्स हे गला सब जिंस कॉम्प्लेक्स एग्रारियन और हायरार्कियल हे गला आ ए जो चेंजेस टा घटिला इन सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ इट सेट द फाउंडेशन for early state formation and later Indian philosophical traditions. Okay. Next question. Explain the various type of inflation and analyze how inflation affects the different sections of society in India. Just giving you 10 seconds to read the question.
এইভাবে গোটে সিমিলার क्वेश्चन आमे ऊपर भी डिस्कस करिजे प्रीवियस गोटे को क्वेश्चन रे ओके सो इंट्रोडक्शन कोन दबा इन्फ्लेशन ऊपर क्वेश्चन अछि तो इन्फ्लेशन ऊपर इंट्रोडक्शन रहइबो गोटे शॉर्ट इंट्रोडक्शन व्हाट इज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कोन सस्टेन्ड राइज मु कहिछि सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऊपर भी सेम इंट्रोडक्शन मु देइथिली एंड एटा कोथि पई कि ऑकर हुए व्हाई इट ऑकर्स ड्यू टू मल्टीपल रीजंस जोटा कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डिफरेंटली अफेक्ट करे डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम कंजम्पशन पैटर्न एंड एसेट ओनरशिप बॉडी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन रे फर्स्ट आमे देखिबा बेस्ड ऑन कॉजेस फर्स्ट टाइप ऑन इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेस कॉजेस ऊपर जेमती कि हमर रही गला डिमांड पुल कॉस्ट पुश देन थर्ड बिल्ट इन इन्फ्लेशन को आ गोटे कौन कह जाए वेज प्राइस स्पाइरल कॉन्सेप्ट गुड़ा मु आ गोटे क्वेश्चन रे ऊपर डिस्कस करछि सो जस्ट मु ब्रीफली कहि देबी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कोन एटा केतेबेले हुए जेतेबेले एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करि जाय एग्रीगेट सप्लाई ठरू एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई ओके एग्जांपल जेमति कि गवर्नमेंट बहुत अधिका एबे स्पेंड करछि हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और हाउस होल्ड कंजम्पशन जदी बढ़ुछि ताहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन हबो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन केतेबेले हबो जेतेबेले प्रोडक्शन कॉस्ट राइज करबो जेमति वर्कर्स मानको जदी अधिका वेजेस देबा को पडुची कि रॉ मटेरियल्स रो प्राइस राइज कला कि फ्यूल रो प्राइस राइज कला कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सेतेबेले जेतेबेले कि प्रोडक्शन कॉस्ट राइज करे जेमती वेजेस रॉ मटेरियल बा फ्यूल सो प्रोड्यूसर से माने कोन करिवे तांकर भी तो प्रॉफिट दरकार तो से माने कोन करिवे प्राइस को इंक्रीज कर दियंती बिल्ट इन इन्फ्लेशन कोन जहा को वेज प्राइस स्पाइरल कहथाउ जेतेबेले प्राइस राइज होची मार्केट रे सब कमोडिटीज रो तो वर्कर्स माने भी सेतेबेले कोन करिवे कि से माने हायर वेजेस डिमांड करिवे फ्रॉम फर्म्स ड्यू टू इन्फ्लेशन हायर वेज डिमांड करिवे सो फर्म्स मान को कौन करिया पड़िबो प्राइस रेज करिया को पड़िबो काहे ना एबे जति आगुर धर मे बी फॉर एग्जांपल 1000 रुपीस जदी से माने दउथिले वेज दउथिले एबे जदी सेकु 1200 करिवे तो से लॉस को कंपेंसेट करिया को तांकर कमोडिटी रो प्राइस रेज करिया पड़िबो फर्म्स रेज द प्राइसेस सो इन्फ्लेशन रेजेस फर्दर सो इट क्रिएट्स अ स्पाइरल ताकू कहा जाय बिल्ट इन इन्फ्लेशन एटा देखले बेस्ड ऑन कॉजेस बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज रे फर्स्ट हमर आसी जाउची क्रीपिंग इन्फ्लेशन आमे केतेबेले कहबा एटा होची गोटे स्लो राइज इट इज राइज दो किंतु राइज टा स्लो होची प्राइस रे 1 to 5% ही बढ़ुची जोटा कि मैनेजेबल स्टेबल इकोनॉमीज रे एटा देखा जाय देन गैलोपिंग आसिला गैलोपिंग इन्फ्लेशन रे कोन हबो प्राइस टा बहुत रैपिडली राइज करबो माने डबल डिजिट हे जिवो क्रीपिंग रे सिंगल डिजिट थिला एथरे डबल डिजिट रे राइज करिवो सो इंडिया गैलोपिंग इन्फ्लेशन तक भी एक्सपीरियंस करिछि ड्यूरिंग फूड एंड फ्यूल शॉक्स तापरे असला हाइपर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन होची एक्सट्रीमली हाई एंड अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन एटा एपन इंडिया विटनेस करिनी देन इन्फ्लेशन अदर टाइप्स जेमति कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कोन ओवरऑल आउ ए इन्फ्लेशन को मेजर करा जाय सीपीआई रे हमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे एटा वोलाटाइल फूड आइटम्स को इंक्लूड करे जेमति कि फूड एंड फ्यूल कोर इन्फ्लेशन कोन कोर इन्फ्लेशन रे फूड आउ फ्यूल को जदी से बास्केट रो हटै दिया जिवो ताहाले सेटा हुए हे जाय कोर इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल
minus food minus fuel. It indicates long term price trends. Stagflation. Stagflation कौन? Inflation high रही किंतु ता सहित से rate रे growth होनी. So slow growth plus unemployment. High inflation plus slow growth plus unemployment. এটা rare কিন্তু এটা হেই পারিব during supply shocks. Now we will see second part कि inflation different sections of societies जो रहिले जेमती households middle class बा farmers तांकू केमिति affect करूची. First of all low income households. लो इनकम हाउसहोल्ड्स जो रहिले तांको केमिति अफेक्ट करछि एक्चुअली दे आर द वर्स्ट अफेक्टेड काहे कि ना से माने बहुत बेसी स्पेंड करंती तांकर जो इनकम रहिला इनकम रो गोटे बड़ पोर्शन से माने स्पेंड करंती ऑन एसेंशियल गुड्स सो दे आर द वर्स्ट अफेक्टेड जदि फूड रे इन्फ्लेशन आसिला फूड प्राइसेस बढ़िला इट हिट्स देम द हार्डेस्ट तांकर सेविंग्स रो वैल्यू रिड्यूस हे जिवो फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिड्यूस होबो and they are the worst affected. Second category रे हमर आसुचंती मिडल क्लास. मिडल क्लास रे तांकर परचेसिंग पावर तांकर इरोड होची काहेकि ना सैलरी तो गोटे पर्टिकुलर एतिकी सैलरी ही मिलची के प्राइस जदी मार्केट रे राइज करबो सेही हिसाब रे सैलरी तो राइज करेनी ना सो इट ऑफन डोंट इंक्रीज एट द सेम पेस so it decrease the purchasing power. Higher EMIs high होची काहेकि ना इंटरेस्ट रेट बढ़ुची लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट necessary becomes necessary. थर्ड सेक्शन हमर किए रहिले फार्मर्स को केमती अफेक्ट करची फर्स्ट द मिक्स्ड इंपैक्ट अछि फार्मर्स मानक पई मिक्स्ड इंपैक्ट जेमती कि क्रॉप प्राइस जेतबेले बढ़ुची इट इज बेनिफिटिंग देम एंड सफर से को एरिया रे करचंती जेतबेले इनपुट कॉस्ट rise faster than MSP or market prices. Okay. Next section, workers and employees. Workers are employees real wages रे reduction देखिया को मिलुची कहीं ना इफ वेज जदि सही पेस रे रिवाइज होनी इनफॉर्मल सेक्टर रे जो वर्कर्स माने रहले से माने पर्टिकुलरली बेसी वल्नरेबल कहीं ना से माने को पारे कोनसी कॉन्ट्रैक्ट न थाए बा इंडेक्सेशन न थाए बिजनेसेस एंड प्रोड्यूसर्स जो हायर कॉस्ट रहिला सेटा हाई कॉस्ट reduces profit margin किंतु जेतबेले हाई डिमांड पीरियड थाए सेटा इट मे बेनिफिट द फर्म्स किंतु जो अनसर्टेनिटी एसोसिएट हेची इन्फ्लेशन संगे इट ऑफन रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट. ओके borrowers and lenders. Borrowers माने एक्चुअली बेनिफिट रुहती कहीं ना जो लोन रो जो रियल वैल्यू रहिला सेटा डिक्रीज करी गला लेंडर्स माने ऑफन से माने तांकर जो रीपेमेंट रहिला आर वर्थलेस इन रियल टर्म सो दे से माने इतरा से माने बेनिफिट रुहती ने.
गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शंस बढ़ी पारे कहीं ड्यू टू हायर नॉमिनल इनकम्स एंड प्राइसेस जमती जीएसटी हो गला हमर इनकम टैक्स हो गला किंतु इन्फ्लेशन जेतेबेले इंक्रीज करे सब्सिडी रो बर्डन आसे फूड हैला फ्यूएल हैला फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन ओके सबु सेक्शन हमें डिस्कस कले नाउ लेट्स कंक्लूड द आंसर इन्फ्लेशन जो इंडिया रे रही छी एटा अराइज करूची फ्रॉम मल्टीपल कॉजेस ଯେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ସପ୍ଲାଇ ଶକ୍ସ ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟସ୍ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ मॉडरेट इन्फ्लेशन एक्चुअली नेसेसरी गोटे इकोनॉमी पाई गोटे कंट्री पाई कहीं ना सी प्रोडक्शन स्टिमुलेट करे एंड वल्नरेबल ग्रुप्स को एतटा यू नो डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट करेनी ठीक अच्छे एक्चुअली मॉडरेट इन्फ्लेशन इज नेसेसरी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पाई कि आमको कौन करिया दरकार एन्श्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी एटा रिक्वायर करछि कोऑर्डिनेटेड मॉनिटरी फिस्कल आउ सप्लाई साइड रिफॉर्म्स to protect all the sections of the society especially the poor. Last question ajiro class ro examine the major causes behind the decline of Indus Valley civilization. How did the early Vedic society differ from the Harappan culture in terms of economy, polity and religion? आईवीसी जोटा कि फ्लोरिश करथला हमर 2600 रु 1900 बीसीई एटा गोटे ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑब्जर्व कला मार्क्ड बाय द अर्बन कोलैप्स एंड ए जो पीरियड थिला इट वाज फॉलोड बाय द अराइवल and settlement of early Vedic people अर्ली वैदिक पीपल जोटा को ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाए से टाइम फ्रेम टाको ऋग्वेदिक पीरियड जोटी जो सोशियो कल्चरल सिस्टम अर्ली वैदिक पीपल आउ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो लोक माने थिले बहुत डिफरेंट थिला फ्रॉम द हड़प्पन पैटर्न्स major causes behind the decline of the IVC. First तो environmental factors थिला जेमती कि river course changes रिवर कोर्स चेंज जेमती कि घागर हाकरा बा सरस्वती जो रिवर थिले ड्राइंग अप ऑफ दोज रिवर्स एंड जो इंडस रिवर थिला से शिफ्ट करिगला तार कोर्स, रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी, फ्रीक्वेंट फ्लड्स,
मोहिंजोदारो ठारू एविडेंस मिली जोटा सजेस्ट करूची कि रिपीटेड फ्लडिंग इट डैमेज द सेटलमेंट्स. क्लाइमेट चेंज, एरिडिटी बहुत बढ़ीगला, मॉनसून्स रे डिक्लाइन देखा, सो इट अफेक्टेड एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई. देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन, डिक्लाइन इन ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जोटा क्यारी करथिले से माने मेसोपोटामिया संगे से कोलैप्स देखा, सो दैट वीकेंड द अर्बन इकोनॉमीज. एग्रीकल्चरल स्ट्रेस, पुअर हार्वेस्ट बा इकोलॉजिकल स्ट्रेन सेटा सरप्लस को रिड्यूस कला. एंड जोटा कि बहुत नीड थिला कि सिटीज मान को सपोर्ट करिया पाई. देन सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स रे कोन पॉसिबल ब्रेकडाउन ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रे ब्रेकडाउन देखा, लीडिंग टू फ्रैगमेंटेशन. Reduction in standardization of weights, seals and architecture. এটা শো কলা कि एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे वीक ही चलची. अदर थ्योरीज इते भी एक्सेप्टेड नुह इन टुडेज टाइम. फर्स्ट होची इन्वेजन थ्योरी. एटा आउटडेटेड थ्योरी एक्चुअली, कहीं एथरे किसी भी क्लियर एविडेंस मिलेनी ऑफ लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट हैला कि आर्यंस मानकर डिस्ट्रक्शन हैला. एपिडेमिक्स, किसी लोग ये सजेस्ट करती कि डिजीजेस माइट हैव कंट्रीब्यूटेड किंतु एविडेंस लिमिटेड अछि. ओवरऑल डिक्लाइन टा ग्रेजुअल थिला आ मल्टी कॉजल थिला, सडन टोटली नथिला. डिफरेंस बिटवीन अर्ली वैदिक सोसाइटी एंड हरप्पन कल्चर. अर्ली वैदिक एंड हरप्पन कल्चर भितर डिफरेंस. फर्स्ट डिफरेंस ऑन इकोनॉमी. इकोनॉमी केमती थिला अर्ली वैदिक सॉरी अर्ली वैदिक इकोनॉमी रे पैस्टोरल थिला. प्राइमरीली से माने पैस्टोरल थिले. कैटल्स तांकर मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ थिले. एग्रीकल्चर थिला किंतु एग्रीकल्चर एडवांस्ड एतटा नथिला, इट वाज लेस एडवांस्ड. बार्ली तांकर मेन क्रॉप थिला. लिमिटेड ट्रेड, सिंपल टेक्नोलॉजी, किसी लार्ज स्केल क्राफ्ट सेंटर्स नथिला, नो लार्ज स्केल क्राफ्ट सेंटर्स. नो स्टैंडर्ड वेट्स और sophisticated marketplaces. हड़प्पन इकोनॉमी रे, हड़प्पन सिविलाइजेशन रे इकोनॉमी केम थिला. फर्स्ट डाइवर्सिफाइड थिला. डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर थिला, क्राफ्ट प्रोडक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से माने कैरी आउट करथिले. यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स, सील्स आ गोटे डेवलप्ड मार्केट प्लेस तांकर थिला. लार्ज स्केल क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थिला तांक पाखरे. क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन. सरप्लस बेस्ड इकोनॉमी थिला. जोटा अर्बन सेंटर्स को सपोर्ट करथला. इकोनॉमी एंगल रो देखिले, पॉलिटी एंगल रो देखिबा डिफरेंस कोन थिला. फर्स्ट तो जो हड़प्पन पॉलिटी थिला सेटा हाईली ऑर्गेनाइज्ड थिला एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थिला. यूनिफॉर्म अर्बन प्लानिंग, देन सेमती किसी क्लियर एविडेंस मिलेनी कि किसी किंग थिले कि पावर कलेक्टिव की इंस्टीट्यूशनल थिला. देयर वाज
there is no clear evidence. Early Vedic re, it was tribal or clan based polity. ଯାହାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚିଫ୍, ଦିଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଥିଲା, ସଭା ସମିତି, କିଛି ବି ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ନଥିଲା, नो अर्बन सेंटर्स और ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. रिलीजन, हरप्पन रिलीजन इट वाज रिलेटिवली सिंपल कहीं ना मदर गॉडेस को से माने पूजा करुथिले. They used to worship mother goddess, fertility symbols, animals, trees. Proto Shiva thile, so there was possibility of proto Shiva, पशुपति सील. टेम्पल्स नथिला से टाइम रे, देयर वाज नो टेम्पल्स. एंड कौन से माने रिचुअल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करूतिले सेटा स्टिल अनक्लियर अछि. अर्ली वैदिक पीरियड रे से माने नेचर को वर्शिप करूतिले, नेचर वर्शिप. इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, जहाँ भी रिचुअल से माने परफॉर्म करूतिले इट वाज सेंट्रल टू रिलीजियस लाइफ. जेमति कि यज्ञस परफॉर्म करूतिले, सैक्रिफाइसेस, देन हिम्स. नो आइडल वर्शिप, किछि मूर्ति नथिला, से माने मूर्ति को पूजा करू नथिले. नो आइडल वर्शिप. एंड रिचुअल्स किए कंडक्ट करूतिला, रिचुअल्स कंडक्टेड बाय प्रीस्ट्स. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन रे जो डिक्लाइन हैला, से डिक्लाइन आमे देखिले कोथि पई हेची, एनवायरमेंटल चेंज पई हेची, इकोनॉमिक वीकनिंग पई हेची, एंड एडमिनिस्ट्रेशन रे जो फ्रैगमेंटेशन हैला सेति पई हेची, कोनोसी गोटिए कारण जोगु हेनी. एंड जो अर्ली वैदिक सोसाइटी आमे देखिले दैट फॉलोड वाज मार्केडली डिफरेंट. सी पास्टोरल थिले रादर देन अर्बन. से माने अर्बन नथले, से माने पास्टोरल थिले. ट्राइबल थिले रादर देन सेंट्रलाइज्ड. नेचर को से माने पूजा करूथिले, नेचर वर्शिपिंग तांको भितरे थिला रादर देन फर्टिलिटी फोकस. फर्टिलिटी फोकस्ड के थिले, आईवीसी हरप्पन सिविलाइजेशन लोक माने, जोडी गोटे कंट्रास्ट प्रोवाइड करूची. आ ए जो कंट्रास्ट रहिला, दिस कंट्रास्ट्स हाइलाइट अ मेजर कल्चरल ट्रांजिशन इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री. ठीक अछि. सो आज आमे 6टा जाक क्वेश्चन डिस्कस कले. आई होप समस्ते नोट डाउन करथिबे जोटा कि तांगर नोट्स रे इंक्लूड नाही. सो थैंक यू, दैट इज इट फॉर टुडे.